and global community generally. Last year, we had the most devastating floods as a result of climate change in Pakistan, which almost completely changed our lifestyle. 33 million people were affected. Millions of acres of standing crop was washed away. Mercifully, it could have been a huge number, but because of very proactive actions by all stakeholders, 1,700 people died, including children, and 500,000 animals were drowned. 2 million houses were either completely demolished or partially damaged. Now, we had to cough out hundreds of millions of dollars from our own pocket with our scarce resources and provide paltry sum of money to these flood affectees all over the country. Of course, we are very grateful to our friendly countries across the globe for their very वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है मौसमियाती तब्दीली के बाइस बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, 20 लाख घर मुकम्मल तबाह हुए। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि पार्लियामेंट के साथ वाली इमारत में सियासत हो रही है। साने 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो कोई इससे बड़ा वाक़या भी रूनुमा हो सकता है। एक शख्स को 2018 में लॉन्च किया गया, जिसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। 9 मई के वाक़े के बाद भी अधूरी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खुदा न खास्ता इसके बाद बहुत बड़ा सानिया पाकिस्तान में पेश आ सकता है। आपकी साथ वाली बिल्डिंग में जो सियासत हो रही है, जिन्होंने इसको लॉन्च किया और आज पूरी कौम भुगत रही है। बेंच रात 8 बजे बनता है, जब वो कह रहे हैं उस बेंच में बैठ के कि जब तक आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कोई भी बेंच होगा तो वो गैर कानूनी कहलाएगा। इसका फैसला वो आएगा तो फिर इसको कौन मानेगा। मुतनाज़ा तकरीर करने पर अली वजीर को 26 माह गिरफ्तार रखते हैं। जो 1 साल से मुतनाज़ा तकरीर कर रहा है, आप उसको 26 घंटे गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? अभी आपको बराह रास्त चलेंगे पेरिस, जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। Far-flung areas where you had to provide medicine, that provide everything for defense of a country or countries, that is perfectly okay. But when it comes to the question of saving thousands and thousands of people from dying, then you have to borrow money at a very high cost. Then you have to go and beg and borrow and further deteriorate your already very precarious financial situation. Ladies and gentlemen, I'm not here to moan and cry and shed tears. I'm here to tell you that I'm a human being. I belong to a country where my people are very brave. They've faced problems and crises in the past and faced courageously. We shall come out of this crisis, inshallah, as winners. But I want to share my experience with you. You are policy makers sitting here. You are great politicians. You are great technocrats. What I'm saying is that unless and until we come out with a fair, equitable, and judicious formula of distribution of resources, financial resources, this world will never live in peace, will never live in happiness. If North is progressing, we are very happy because
we look forward to having their experience and implementing their experience in our country for progress and providing jobs, providing livelihood, industry, agriculture, promote it. But this must also be remembered that if South is in trouble, how can North be in peace? It's like one body. If one of the limb of the body is painful, you can't say the rest of the body is in peace. So, what I'm saying is, let's, here in Paris, we've gathered here today. I heard her speech this morning. It was a very, very emotional speech, and it touched hearts. And here he has spoken very well, and others, all of you, my brother, President of Uganda, and other speakers will speak. Let me say, without any fear of contradiction, unless we come forward in generous terms to provide an opportunity and a system and a mechanism which will satisfy the most vulnerable at bare minimum, and which will create harmony in terms of economic justice and fairness, this world shall always be in trouble. And my concluding remark would be, it's never too late. Let's stand up and say no to injustice. Thank you very much. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त खिताब कर रहे थे पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग समिट से, और इस समिट में आलमी मुआशी सूरत हाल से निपटने के लिए माली इक़दाम के मौजू पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, और इससे खिताब में उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। खबरें